आ गई हूँ, अभी मैं कैब से उतरी हूँ और अभी मैं अंदर जाऊँगी, तो लेट्स गो गाइस। तो इस बार मुझे एंट्रेंस ढूंढने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कल परसों यहाँ ऑफिस आई थी, तो मुझे एंट्रेंस पता है कहाँ पे, ठीक है। तो इफ़ यू नो यू नो। एक सेकेंड। तो मुझे लगा था कि मुझे वो वाली मेरा जो ऑफिस होगा वो वाला होगा जिसमें ताज वाला थीम है, बट ये कोई और बिल्डिंग है, ठीक है। एनीवे क्या ही कह सकते हैं, बट ओके। थैंक यू सर। तो गाइस देखो, सुंदर है भाई बहुत। So guys, before moving forward, if you're someone who's trying to get a shot at top product based companies and are having multiple failed attempts, so this is the time to recheck your preparation strategy. If you're struggling with inconsistency, lack of mentorship and lack of time, but still dream of working for companies like Google, Microsoft, Walmart, Amazon, etc., then I have a perfect upskilling platform for you, which is Boss Coder Academy. Boss Coder has helped 1200 plus working professionals to get their dream job through their various upskilling programs. The Transformer program is for working professionals who have up to 6 years of experience, and their Evolve program is for professionals who have more than 7 years of experience. Once you enroll in their program, you get a structured curriculum designed by industry experts where DSA, system design, full stack specialization, and everything is taken care of. You get live interactive classes with one-on-one mentorship. Regular problem solving with regular contests make your skills top notch. Their extensive mock interviews make sure that you have right skill and confidence to crack any technical interview. Once your curriculum is completed, they give you specialized sessions on resume building, LinkedIn optimizations, and 100% job opportunities. You can check out their alumni reviews, fees, and instructors, everything on their website. I'll give the link in the description. So what are you waiting for? Go check them out. ना तो मेरे पास अभी एक्सेस कार्ड है, ना कुछ है, पता नहीं क्या गुंडा बनेगा रे तू। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर लिफ्ट में कैसा होता है। मैं किसी भी लिफ्ट में चली गई, मुझे लगा फ्लोर सेलेक्ट करना होगा, बट वो फ्लोर सेलेक्ट नहीं करना था। हमें यहाँ पे कुछ करना होता है जिससे वो हमें वो फ्लोर सेलेक्ट करना, फिर वो लिफ्ट डायरेक्टली उसी फ्लोर पे जाएगी। तो एक लिफ्ट एक ही फ्लोर पे जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, और ये 7th फ्लोर पे आ गए हैं। गाइस, अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, तो चलो देखते हैं। वॉलमार्ट का खाना तो बहुत खाया, अभी माइक्रोसॉफ्ट का खाना खा के देखते कैसा है। आई नो समवन। सो गाइस, ब्रेकफास्ट में ले आई हूँ ऑलमोस्ट सेम आइटम्स ही है जैसे वॉलमार्ट में होती थी। पराठा है, इडली है, सांभर, दही है। पर यार वॉलमार्ट की याद तो आ रही है यार, ठीक है, कुछ नहीं होता। अभी तक कोई टीम में से आया नहीं है, तो मेरी टीम 6th फ्लोर पे बैठती है। अभी तक कोई आया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इधर उधर ऑफिस देख लेते हैं कैसा है।
गाइस देखो यहाँ पे लॉकर भी है, तो अगर आपको कोई सामान रखना है अपना, आप उप्स सॉरी किसी का लॉकर खोल दिया, तो आप यहाँ पे सामान रख सकते हो। ये लॉक हो जाएगा बट नॉट श्योर ये लॉक होगा या नहीं। एनीवे गाइस अभी तक मेरी टीम आई नहीं है और मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इधर उधर ऑफिस देख लेती हूँ। तो अभी मैं 6th फ्लोर पे बैठती हूँ। मैंने 4th फ्लोर देख लिया, अब मैं 5th फ्लोर पे जा रही हूँ। तो लेट्स सी। हाय गाइस, सो मेरे को लैपटॉप तो मिल गया है, पर अभी लैपटॉप में कुछ सेटअप पे इशू आ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ, तो मैं अभी ऊपर IT एसेट्स डेस्क के वहाँ जा रही हूँ। डाल दूँ? मैं अभी 7th फ्लोर पे हूँ। वो कार्तिक से वाला लैपटॉप दे दो। फंस जाएगा। तो गाइस ये पीयूष है, इसने मेरी हेल्प करी है काफ़ी ऑनबोर्डिंग में, तो अभी भी बहुत इसका दिमाग खाऊंगी मैं, क्योंकि अभी बहुत काम पड़ा है। गाइस अभी हम लंच करने जा रहे हैं, तो एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था, तो मेरी टीम बैठ गई ऑलरेडी, सो लेट्स गो। सो गाइस मेरे लैपटॉप का अभी सेटअप ही चल रहा है, और कुछ पासवर्ड जनरेट करना था, वो मैंने करवा लिया, और अब मैं ऊपर जा रही हूँ फिर से IT डेस्क पे सेटअप करवाने। तो हाँ, पहले दिन तो ऐसे ही होता है यार, मतलब मोस्टली आई गेस टीम के बारे में जानना और सेटअप करवाना, एसेट्स लेना, हाँ मोस्टली दैट इज़ व्हाट इट इज। गाइस दिस वॉज माई फर्स्ट डे एट माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप लोग मुझे पहले से ही मेरे चैनल को फॉलो करते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट डे एट वॉलमार्ट बनाया था, और अब ये फर्स्ट डे एट माइक्रोसॉफ्ट है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सो गाइस मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, आज केक काटा, वेलकम केक, और काफ़ी अच्छा लगा। टीम भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सारे न्यू जॉइनर्स हैं मेरी टीम में, और प्रोजेक्ट भी अच्छा है। तो आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब सही जाए। एंड ओके सर, डिनर मिलता है? इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। वीडियो में मिलते हैं, टिल देन आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट।